Assalamualaikum. It's been quite a while. I could not manage to come up with a new video, but today I've finally decided to make a couple of videos so that you could get benefited. और as usual, जैसे मैं ग्रामर के टॉपिक्स लेके आता हूँ, आज भी मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक जो है ये अपनी नौइयत का एक one of the most important topics it is considered और इसका जो टाइटल है that is subject-verb agreement. So I'll talk a little bit on this very topic and then we'll get down to business. इसके rules जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा. So subject-verb agreement is a fundamental concept in grammar that ensures harmony and clarity in written and spoken language. This grammatical principle stipulates the verb in a sentence must agree in number with its subject, meaning that a singular subject or singular subjects require singular verbs. Likewise, plural subjects necessitate plural verbs. This agreement is crucial for maintaining grammatical coherence and conveying idea accurately. Inconsistencies in subject-verb agreement can lead to confusion, disrupt the flow of communication and compromise the overall effectiveness of written or spoken expression. Therefore, a solid understanding of subject-verb agreement is essential for anyone aiming to communicate clearly and concisely in the English language. This introduction sets the stage for a comprehensive exploration of the rules and nuances surrounding subject-verb agreement and its significance within the broader context of grammatical structure. So let's get down to touch upon the important rules that I have brought for you. मैं चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं ये आपको समझ में आए कि कैसे सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ एग्री करता है और किन किन सर्कमस्टांसेस में हमने सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट का ख्याल रखना है. सो लेट्स गेट डाउन टू इट. सो द फर्स्ट रूल इज कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. Likewise, if the subject is plural, the verb must be plural as well. For example, she writes every day. अब इसमें अगर हम देखें तो सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है और उसी हिसाब से हमने वर्ब को लिया हुआ है, दैट इज राइट्स. लाइकवाइज अगर मैं कहता हूँ कि दे आर करंटली एन अ मैनेजरियल रोल एट द ऑर्गेनाइजेशन, तो दे के साथ जो है वर्ब एग्री कर रहा है आर, क्योंकि दे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है प्लूरल सब्जेक्ट को. तो ये था पहला रूल. अच्छा, समटाइम्स हाउएवर इट सीम्स अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस, जो हमने अभी डिस्कस किया, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ जाता है. दैट इज़ द रूल नंबर 2. एंड व्हाट इट इज़ कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस is composed of two or more nouns or pronouns connected by and means conjunction, use a plural verb. For example, the doctoral student and the committee members write every day. अब अगर आप देखें the doctoral student and the committee members, ये and जो कि conjunction है वो connect कर रहा है इसको, तो हमारा जो ये subject है ये plural बन जाता है और इसी हिसाब से हमने वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से ऐड करना होता है. फिर हमारे पास जो थर्ड रूल आता है वो ये है कि व्हेन देयर इज वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब, द वर्ब्स थ्रू आउट सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट. इंटरव्यूज आर one way to collect data and allow researchers to gain an in-depth understanding of participants. Interviews, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है और इसी के साथ जो है वर्ब एग्री कर रहा है आर, और फिर अगर आप लेटर ऑन देखें allow also agrees with our subject that was interviews. तो इस चीज़ का ख्याल रखना है. इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि an assumption is something that is generally accepted
as true and is an important consideration when conducting a doctoral study. अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो assumption है और इसी के साथ वर्ब agree कर रहा है is और later on sentence में again is, तो इस चीज़ का ख्याल रखना जो है ये बहुत ज़्यादा important है. Now let's move on to rule number 4. When a phrase comes between the subject and the verb, remember that the verb still agrees with the subject, not the noun or pronoun in the phrase following the subject of the sentence. मतलब ये कि जो हमारा subject है अगर उसके बाद कोई phrase आ रहा है, अब अगर उस phrase में noun है और pronoun है whatever, verb उसके साथ agree नहीं करेगा, बल्कि verb जो subject है उसके साथ agree करेगा. Just have a look at this example and you would understand what exactly I mean. The student as well as the committee members is excited. अब अगर आप देखें ये as well as the committee members ये हमारे पास एक phrase form में आ रहा है जिसको हमने inverted commas से disconnect भी कर दिया है जो कि main sentence से है. हमारा इसमें subject student है और is excited ये जो है subject के साथ agree करेगा, इस वजह से ये is है. हालांकि अगर आप देखें तो लग यूँ रहा है कि the committee members are excited, but which is not correct. Likewise, the students with all the master's degrees is very motivated. Is आएगा यहाँ पे. With all the master degrees ये हमारा subject नहीं है. This is the additional information about the subject. तो subject जो हमारा है यहाँ पे singular है, तो ये is इसके साथ agree करेगा. इसी तरह strategies that the teacher uses to encourage classroom participation include using small groups and clarifying expectations. कहने का मतलब कि strategies जो है ये हमारा subject है. इसी वजह से जो verb include है वो strategies के साथ agree कर रहा है. मतलब ये कि includes नहीं, include, क्योंकि strategies जो है वो plural form में है. इसी तरह एक और example, the focus of the interviews was 9 purposely selected participants. अब अगर आप इसमें देखें the focus of the interviews, लग यूँ रहा है कि interviews है and the verb should be agreed with interviews, but no, not at all. In this very sentence our subject is the focus. Focus हमारा subject है, तो verb agree करेगा focus के साथ और इसी वजह से इसके साथ was आ रहा है. तो ये था हमारा rule number 4. Now let's move on to rule number 5. When two or more singular nouns or pronouns are connected by or nor, use a singular verb. कहने का मतलब ये कि दो या दो से ज़्यादा जो nouns और pronouns हैं अगर वो connected हों किसके साथ, or या nor के साथ, तो हम singular verb को use करेंगे. For example, the chairperson or the CEO approves the proposal before proceeding. अब इसमें और है means कि ये conjunction की तरह काम नहीं करेगा यहाँ पे, दो के it is conjunction, लेकिन conjunction and की मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी तरह काम नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे ये singular verb को prefer करेगा. When a compound subject contains both a singular and a plural noun or pronoun joined by or nor, the verb should agree with the part of the subject that is closest to the verb. This is also called the rule of proximity. कहने का मतलब ये कि और nor से connected अगर आपके पास आ जाते हैं ये singular and plural noun और pronoun, तो verb जो है ये agree करेगा, मतलब जो कि subject जो है वो verb के नज़दीक हो. For example, the student or the committee members write every day. अब अगर आप इसमें देखें और के बाद committee members है जो कि verb के करीब है, तो rule of proximity के मुताबिक यहाँ पे verb इस subject के साथ agree करेगा. Likewise, the committee members or the student writes every day. अब अगर इसमें देखें वही जुमला, लेकिन इस मरतबा the student जो है वो बाद में आया है और के, यहाँ पे verb student के साथ agree करेगा. इसी तरह in rule 7, the words and phrases such as each, each one, either, neither, everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, somebody, someone, no one are singular and require a singular verb.
इस जो मैंने अभी आपके सामने ये वर्ड्स और फ्रेजेस लेके आया हूँ ये सिंगुलर हैं और इनके साथ वर्ब सिंगुलर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज विलिंग टू बी recorded. Each of the participant was. Neither alternative hypothesis was accepted. I'll offer a $5 gift to everybody who participates in the study. No one was available to meet with me at the preferred times. तो इसमें आपने देखा no one, neither, everybody, each जो भी आ रहे थे इनके साथ जब वर्ब एग्री कर रहा था तो वो सिंगुलर में आ रहा था. अब आगे मूव करते हैं रूल नंबर 8. अच्छा, अपने ज़हन में ये ज़रूर रखें कि जो नॉन काउंट नाउन्स हैं दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस. लाइकवाइज, diabetes affects many people around the world. The information obtained from the business owners was relevant to include in the study. The research I found on the topic was limited. Rule number 9, some countable nouns in English such as earnings, goods, odds, surroundings, proceeds, contents and valuables only have a plural form and take a plural verb. For example, the earnings for this quarter exceed expectations. The proceeds from the sale go to support the homeless population in the city. Locally produced goods have the advantage of shorter supply chains. In rule number 10 of subject-verb agreement, like in sentences beginning with there is or there are, the subject follows the verb. Since there is not the subject, the verb agrees what follows the verb. For example, there is little administrative support. लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में आप देखें सेम देयर यूज हो रहा है लेकिन सिचुएशन डिफरेंट है. देयर आर मैनी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर रिटेंशन. अब इसमें फैक्टर्स जो है ये आपका सब्जेक्ट है और इससे पहले का जो सेंटेंस था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट आपका सब्जेक्ट था तो वर्ब अकॉर्डिंगली एग्री हुआ. Now let's move to rule number 11. Collective nouns are words that imply more than one person but are considered singular and take a singular verb. Some examples are group, team, committee, family and class. तो ये single है और ये verb भी जो है ये single take करेंगे. For example, the group meets every week. The committee agrees on the quality of the writing. However, the plural verb is used if the focus is on the individuals in the group. This is much less common, but it is there. For example, the committee participate in various volunteer activities in their private lives. The committee participate means the members of the committee. They participate in various volunteer activities in their private lives. Likewise, Pakistan need 58 runs to win the match. Now, it should have been Pakistan needs, but it's not about the country. It's about 11 players. And they need 58 runs to win the match. That was all, regarding subject-verb agreement. I hope कि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा. आपको समझ भी आएगी कि क्यों subject और verb agreement जो है वो important है. जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको. और आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से मुझे एक विगर मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलता है, एक एनर्जी मिलती है और इसी तरीके से हमारी जो ये फैमिली है इट विल कीप ग्रोइंग. विद दीज वर्ड्स आई बेग लीव. टेक बेस्ट केयर ऑफ योर हेल्थ. सी यू इंशाल्लाह वेरी सून. अल्लाह हाफिज़.